मुझे बियर पीना बहुत अच्छा लगता है. तो आई रियली वांट टू नो दैट एम आई रॉन्ग और एम आई राइट. How do I attract right kind of people in my life? You must trust your own destiny. Somebody is doing something better than me, so I would feel like there is a fear of missing out. FOMO. How does one choose a partner for a long-term marriage? Look, the question is coming to a wrong number. How do I figure it out कि she wants to talk to me या फिर फेम और मनी के लिए है? You know, you have something called a gut feeling. Trust that. How to overcome the laziness? Why not I give the answer to this next year? Do we really have free will? You have a say in your destiny. This is the best answer, Gurudev. Gurudev, in a world where monogamy is dying and trusting someone to marry has become a big issue for especially millennials out here, how does one choose a partner for a long-term marriage? A long-term marriage where divorce rates are only increasing. Look, the question is coming to a wrong number. When you are looking for a partner, don't just look about their statuses, how rich they are or how poor they are. They all can change. See what is happening. Someone who is the third richest person has come down. And one who is fourth richest person in the world few decades ago, today is not even in the first 100. So, don't look about the status. Don't look about these things. Just look at the human quality in the person. Are they pleasant? Are they kind? Are they loving? Are they responsible? Do they have any addictions or any habits that can pull them down? Just see these things. This is good enough. Hello Guruji, I might sound a little stupid but I really want to know this. आजकल क्या होता है, बहुत से लोग हैं जो पैसों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट अगर कोई लड़की बात करती है आगे से, अगर वो मैसेज करती है और समथिंग, हाउ डू आई फिगर इट आउट कि शी वांट्स टू टॉक टू मी या फिर फेम और मनी के लिए है? हाउ डू अ गर्ल और अ गाय सेंस दिस थिंग? You know, you have something called a gut feeling. Trust that. अपने भीतर से देखो, अपना gut feeling क्या कहता है. Things move with vibration, not just with words. We convey more through our vibrations. हमारी तरंगों से लोगों को ज़्यादा महसूस होता है व्यक्ति पॉजिटिव है, अच्छे हैं, सिंसियर है, नहीं सिंसियर है. दूसरा कोई दिमाग से क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए. बट गुरुजी वो जो पॉजिटिवनेस दिखाते हैं ना, उसने तुमने बोल ही दिया, दिखाने वाले पॉजिटिविटी अलग होती है, मगर तुम्हारे गट फीलिंग में होता है, वाइब्रेशन मिलता है. तुमको लगता है ये ज़्यादा दिखा रहे हैं, समझ में आई गया. मगर यदि तुम भय में बैठ जाते हो, तुम्हारे मन में हमेशा भय है, हर एक को इस दृष्टिकोण से देखते हो, तो तुम चूक जाओगे, रह जाओगे. देखो, हर एक में तुम परफेक्शन देखने की चेष्टा मत करना भाई. हाँ जी, हाँ जी. हर एक एनलाइटेंड व्यक्ति तो नहीं होगा, हर एक ज्ञानी तो नहीं होगा, हर एक ऐसे तृप्त व्यक्ति तो नहीं मिलेंगे. किसी किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होगी. हम ऐसे आइडियलिस्टिक क्वालिटी सब में एक्सपेक्ट करते हैं. तुम थोड़ा सा हट के उनके दिमाग से तुमको देखें, वो देखेंगे तो क्या देखेंगे तुम में? अरे ये आदमी बड़ा इनसिक्योर है, नर्वस है, हर एक को शक करता है, तो कोई पसंद करेंगे क्या? रिपल्शन आ जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा. अरे ये व्यक्ति हर एक को इस नजरिया से देखते हैं, हम इनसे कुछ लेने के लिए हम हो गए जाएगा. व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है कि एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति चाहता है ना. हाँ जी. तो उनमें कुछ डिग्निटी होती है, तुम उसको रेस्पेक्ट करो, वो देखो. दो एक्सट्रीम होते हैं, ये तो सबको शक के दृष्टि से देखना. दूसरा है इतना गलिबल रहना, कोई तुम्हें प्राइज करे तो ऐसे पिघल जाए, मई के महीने के मक्खन जैसे. वो उठा के तुम टोस्ट में जब तक लगाते हो तब तक पिघल ही गया हो. तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए. ये बात समझ में आ गई ना? हाँ जी, आ गया है ना? आ गई है. हाँ. द क्वेश्चन इज
people say just do whatever makes you feel good, right? तो मुझे बियर पीना बहुत अच्छा लगता है. मैं जब बियर पीता हूँ I feel good. But my mom says कि तेरे को थोड़ी सी भी नहीं पीनी चाहिए, don't do this. तो I really want to know that am I wrong or am I right? तुमको पता ही है कोई चीज एडिक्शन ऐसे ही शुरू होता है. पहले सोशल ड्रिंकिंग शुरू करते हैं और थोड़ा उसमें अच्छा लगता है, फिर हम अपने बाउंड्री लूज कर लेते हैं. क्यों इन चीज़ों को हमें बाउंड्री लगा के रोकना है मजबूत? क्यों? हम अपनी सेफ्टी के लिए. जब भी हम देखते हैं हमारा मन थोड़ा वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, हाँ जी. और हमारा नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर है, तो हम ये टेम्पररी मेजर को लेके अच्छा थोड़ा बीर पी लिया, ये पी लिया, इस करके टेम्पररी रिलैक्सेशन लेने की चेष्टा करते हैं. आगे आदत इसका बड़ा बनने में कोई देर नहीं लगता. ये तो है. कुछ टेंशन बढ़ते तो ये आदत हो जाएगा. वो ऐसी चीज है जो बर्बाद कर बैठता है आदमी. हमारे कितने युवा, कितने परिवार इस देश में बर्बाद हो रहे हैं इस बात को लेके. The question that I wanted to ask is a bit unconventional, but in a more funny way. If spirituality was a dish, what would the right ingredients be for it to be yummy? Spirituality is a dish that makes everything yummy. If life has to be yummy, it should have spirituality. How do I attract right kind of people in my life and not attract the same kind of people, like same traits, Same pattern. same patterns? First of all, we should see that if we live in an imaginary world of some perfect man or perfect woman in our life, actually it's not going to happen. You must accept people with a little bit of imperfection and see if you can bring them into perfection, or if you can help them to be imperfect, to get over their imperfections. Number one. And you may find someone very perfect tomorrow, day after, even 1 year, but after 3-4 years, you suddenly end up seeing they have no perfection. What do? You must trust your own destiny. See, I will get only the best, number one. Second, you see how you can contribute in somebody's life rather than wanting something from their life. See, two persons coming together, wanting to contribute to each other can make things better, rather than two persons expecting something from the other. Works for a short period of time, but in the long run it falls apart. गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि as content creators, influencers, all of us are doing so good in our streams. Though sometimes it happens, we feel like not good enough. Somebody is doing something better than me, so I would feel like there is a fear of missing out. FOMO. So how to overcome that? Okay, there are three things you can do about FOMO. One is look back. Is this the first time you are having FOMO? No. You have had it last year, few months back. How did you manage it? You didn't do anything about it. It just passed by. But you came out shining. Correct? Yeah. So your own experience is there to tell you. We forget to take a look at the previous FOMOs we have had. So look at the FOMOs, count them, write them the date and time when you had FOMOs. And say, hey, ये तो कुछ नहीं है. उसमें आपको ऐसे लगेगा, अरे ये तो मैं तो मैनेज करूंगा जितने भी आए. और दूसरों को भी आप बोल सकते हो, अरे तुम्हें FOMO आया, नोट करो. These are like the humps you get over, like speed breakers. Nobody stops the car in the speed breakers. They just slow down, that's all. It only slows you down. It cannot stop you. No FOMOs can stop you. Second is, no success has ever come to anybody without facing some failures in the initial stages. That's a big lesson. If you find you are failed here, and it's a step towards the success. Next one will come. Third formula, what I'm saying, know that only best can happen to you and there is a bigger force that's guiding you. Guruji, namaste.
Guruji, my question is that how do we balance the spiritual and the materialistic world? So sometimes it feels like a crime to want a good life, to, want more luxuries in life when so many people are suffering. So how do we balance these two things? I want to tell you one thing. Don't feel any guilt when you want to make progress in your life. You can't do charity from an empty bowl. अपने पास कुछ हो तो दूसरों को दे सकते हैं. अच्छा, then you can't consume everything what you get. Nothing wrong in getting, but you have to share also. See, anyone who gets anything, at least he shares with his close family, friends, relatives, right? You extend that, you have a bigger family. See, spirituality is in no way contrary to material progress. See, if you don't have to go to market, why do you need money? So someone who has nothing to do in the society don't need to meditate at all. Why do they need energy? You need energy when you want to do something, right? You need money in cash in hands when you want to spend. So why this spirituality, meditation, and especially these practices, it gives you strength. It pumps you with confidence. It helps you to be resilient when failures come. It helps you to face challenges. And then it improves your intuitive ability and innovative spirit. Do we really have free will? Or is everything predestined, or is everything happening because it's planned out already? Human life is a combination of both free will and destiny. For example, your height, it's your destiny, right? 5 feet 4 inches is your height? Correct. Correct? So now you want to be 6 foot tall, it's not going to happen. But your weight is your free will. You can put on another 15 kilos. And if you are heavy, you can reduce. That's your free will. You can't say, oh, I'm weighing 85 kilos, this is my destiny. So does that mean we are co-creating our destiny with universe? You have a say in your destiny. See, you have a say. It's raining, that is destiny. Your free will is whether to get drenched or not. You take an umbrella, you won't get drenched. Put on a raincoat, you'll be dry as before. It's not like a bhais on the street which has no choice. Yes. It just moves with this instinct. But we have a brain, so we have a choice. Is our choice unlimited? Is infinite? No. You are holding the dog with a leash. The dog has freedom only to move within that length of the leash. In that it has freedom. But beyond that, unless you leave the leash, it can go anywhere. So like that, human life has certain limitations. That is natural law, you can say. So destiny is there, but it leaves you a little freedom of free will as well. And if you are meditating, you are on a spiritual path, the leash becomes so long, your space of freedom becomes more and more. How to overcome the laziness and to be more disciplined in life? Why not I give the answer to this next year? बाद में कभी आंसर दे देंगे. This is the best answer, Gurudev ji. See, जब हमारी अपनी काम की बात होती है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन पसंद नहीं होता हमको. आपने एक अच्छा गारमेंट स्टिच करने के लिए दिया, किसी की शादी में जाना है आपको. वो टेलर बोलता है, जी हम बाद में देंगे जी. तुमने दिवाली में दिया, वो होली के पास देने के लिए तैयार हो जाता है. तो तुम्हें क्या लगेगा? गुस्सा आता है. Right. You don't like it, right? No. You want everyone to be on time and follow their commitment. When it comes to us, we procrastinate. उस वक्त ये याद कर लेना चाहिए. I have to be an example. I cannot procrastinate.
गुरुजी, हमने जब ये क्रिएटिव जर्नी शुरू करी थी अपनी लाइफ की, तो बहुत ही बिना एक्सपेक्टेशन के शुरू करी थी और हमें अपना काम करना पसंद था. बट अब काम करते करते हम एक ऐसी एज पर आ गए हैं जहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा बिजनेस एंगल की तरफ लेकर जाना पड़ रहा है. एंड वहीं पर मन में ये सवाल आते कि क्यों, वाई कांट वी बी आवरसेल्व्स, कैसे चलें आगे रास्ते पे क्रिएटिविटी और बिजनेस को साथ में लेकर. अच्छा, एक बात है, यदि हम सोचते हैं हम सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही संपर्क रखना है तो सारे गलत लोग एक साइड में हो जाएंगे. उन पे कैसे तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो? तुम अच्छे बुरे गले इस तरह से सोचना नहीं, अनलेस यू वांट टू मेक देम पार्टनर इन योर बिजनेस. बट व्हेन योर कनेक्शन, उसमें अच्छे बुरे सबको लेना चाहिए. यू नेवर नो, बुरे आदमी के अंदर भी कोई अच्छा आदमी छिपा हुआ है, अच्छे व्यक्ति के अंदर भी कोई बुरा हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी है ना भाई. तो एक तो ये बात, ये टैग लगाना, लोगों को जज करना छोड़ दीजिए, नंबर 1. दूसरा, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं, करो आप बिजनेस, क्यों नहीं करना है? फीवरिशनेस के साथ नहीं, वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना वैल्यूज में डटे रहे तो तुमको तुम्हारा रेस्पेक्ट बना रहेगा. और अपना बिजनेस एक्सपेंशन करो, क्यों नहीं? और लोगों से मधुर व्यवहार करने में अड़चन क्या है? एंड दैट इज बीइंग योरसेल्फ. सी, मेनी टाइम्स वी थिंक बीइंग रूड इज बीइंग आवरसेल्फ. बीइंग हार्श मीन्स आई एम राइचियस, मैं सही हूं, माने मैं कठोर हूं. जरूरत नहीं है. तनाव से भर जाते हैं तो बड़ा कड़वापन हमारे में आने लगता है और हम एक्स्ट्रा मधुर रहने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए. और लोगों को भी पता चल जाता है, अरे ये तो ऐसे ऊपर. तो लगता है कि बहुत ज़्यादा, संस्कृत में एक कहावत, अति विनयम धूर्त लक्षण. बहुत ज़्यादा विनम्रता दिखाते हैं ना, वो बड़ा धूर्त होता है. तो हमें एक मॉडरेट लेवल पे अपना चलना चाहिए, बैलेंस्ड.